to my channel Learn with Experience. In previous lectures we have done the question number 9, chapter name Arithmetical Progression, and exercise 5.2, question number 9. So in this lecture we will solve the question number 10 step by step, everything. So we just proceed. In question number 10 given that if 17th term of an AP, किसी AP का एक AP है उसका 17th टर्म 17वां टर्म एक्सीड्स ज्यादा है इट्स अपने ही 10th टर्म से बाय 7, उसके जो 10वां टर्म है कोई AP है उसका एक 10वां टर्म है एक 17वां टर्म है, जो 17वां टर्म है 10वें टर्म से 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा बाय 7 ज्यादा है। सो कह रहा फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है। मैं एक बार फिर इसको उस क्वेश्चन बता देता हूँ। कह रहा इफ द 17th टर्म 17वां टर्म ऑफ एन एपी, उस सीरीज के एपी का एक्सीड्स ज्यादा है इट्स अपने ही 10वें टर्म से बाय 7 ज्यादा है। सो वी जस्ट प्रोसीड। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट first term A and CO common difference D is the given AP. That first term as we know Tn is equal to A plus n minus 1 into D, where Tn is the value of nth term, value of nth term, value of nth term. Okay, so from the questions 17th term, so first of all we put the value 17. So T17 is equal to A plus n is equal to 17 minus 1 into D, or we can say that T17 is equal to, okay, no problem, is equal to T17 is equal to A plus 16 D. Okay, question number 1. Okay, so T17 is equal to A plus 16 D, equation number 1. Now similarly sorry, we can, okay, no problem. Now similarly T10th, right? T10 is equal to A plus 9D. Okay, equation number 2. Okay, T17 given that दिया क्या है, if the 17 term of the AP exceed ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 10वें टर्म से 17वां टर्म 7 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ, कह सकते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन T17 minus T10 is equal to 7.
मतलब इसका मतलब 17वां टर्म 7 ज्यादा था 10 से, इसका मतलब 17 में से 17वें टर्म से 10वां टर्म में निकालता हूँ तो कितना बचेगा 7 बचेगा. ओके, so we put the value from equation 1 and 2. T17 we know the this is the 16. Okay, so put the value a plus 16d minus दूसरी वैल्यू कितनी थी, T10 की वैल्यू है a plus 9d. So put the value a plus 9d is equal to 7. Understood? Okay, solve this one. We can also this one in bracket, no problem. If you want, this is not mandatory, but if you want, you can do. So a plus 16d minus into plus is equal to minus a minus 9d is equal to 7. a and a will be reduced to 16. a और a कैंसिल हो जाएंगे, 16 में से 9d हम घटाएंगे तो बचेगा 9 plus 7 is equal to 16 होता है. So it will be 7d. 7d is equal to d. 7d is equal to 7. So d is equal to 1. Hence the given AP, hence the common difference, of, hence the common difference of given AP is 1. Okay. Okay, this is the solution of the equation number 10. Thank you so much for watching the solution. अगर आपको इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट में बताइए ताकि मैं उसको दोबारा आपको समझा सकूं. दोबारा एक मैं वीडियो बना दूंगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है. सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में आपको समझना पड़ता है कि हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, देन यू कैन फाइंड द आंसर. मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ. क्वेश्चन सिर्फ क्या कर रहा है, द 17 टर्म ऑफ एपी, 17वां टर्म किसी एपी का 17वां टर्म 7 ज्यादा है 10वें टर्म से. इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, T17 में से T10 घटा दिया, 7 ज्यादा था तो इसका मतलब उसके 7 के बराबर हो गया. जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आप हो, आपका भाई है, आपके पास उससे ज्यादा 7 रुपए ज्यादा है. इसका मतलब अगर आपके भाई के पैसे को आप वाले पैसे में से निकालेंगे तो कितना बचेगा, इतना बचेगा. सेम थिंग है करके यहाँ पर T17 minus T10 is equal to 7. So D is equal to, यहाँ पर हमने निकाल दिया फाइनली 1. So this is the common difference we have already let. Here is the common difference is D. We have already got. So hence the common difference of the given AP is equal to 1. Thank you so much for watching our video. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू सो मच.